So, good morning to everyone. So, let's see what I have today for everyone. Okay. So, yes, now the first topic got covered, which was related to how to become a good store manager. Now, again, I have got a new topic related to store manager only. So, what is the topic? Store manager risk. So, what kind of a risk is involved related to store management or related to retail store management. Okay, so we will not go much more deeper, but we will try to understand that whether that whatever I am talking related to risk can we control, or do we have experience to hold that risk and all the things. Okay, so let's see. So what is risk? So the point number one, risk involves uncertainty about the effects, implications of an activity with respect to something that humans value. This is also risk, correct? Often focusing on negative. So if you are doing any activity inside the store and it's not got successful impact and all the things, then also it's a risk only. Undesirable consequence. So you had a plan that because of this activity, I'll be getting this much customer, and that was not up to the mark. Then a situation involving exposure to danger. So kind of things you did are going to happen, which can be a danger for your business. Anything, it can be anything. Then expose to danger, harm, or losses. Someone or something valued. Correct. So it can be anything like suppose one customer came and he said ki I need a service for this product, and your policy said ki out of warranty whatever products comes customer has to pay, but customer is not ready to pay because he had also some kind of a reasonable experience. Correct. So these are all can create a risk for this store. चलिए हिंदी में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? तो ये एक प्रकार का लॉस होता है, और लॉस हानि होता है। इससे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आपका काम रुक सकता है, या फिर एक प्रकार का ये कॉन्सिक्वेंस होता है। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, और आपने टारगेट लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। एंड रिस्क हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन कभी-कभी रिस्क पॉजिटिव ही हो जाता है। ये पॉजिटिव क्यों होता है वो हम आगे आने वाले चैप्टर में जानेंगे। ठीक। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज समझने की यहाँ पे आवश्यकता है कि रिस्क कभी भी ना लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी हमेशा गलत थोड़ी करते हैं। करेक्ट। कभी 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 हो जाता है, एंड वी डोंट नो। ह्यूमन मिस्टेक भी होते हैं, सिस्टम मिस्टेक भी होते हैं, इन्वायरमेंटल मिस्टेक भी होते हैं, सोशल मिस्टेक भी होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने कुछ किया और उसकी वजह से लॉस हो गया तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन किसी न किसी के ऊपर तो घड़ा फोड़ा जाएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व when you are managing the store. Okay, so how to control the risk? So this is a kind of a process, or you can say principle kind of things, but you can have your own idea also. How to close the risk, how to minimize the risk, how to reduce the risk. These are all the things you can do. Okay. So suppose you have got some kind of a risk. So point number one, find out the risk. What kind of a risk you have. So the kind and all the thing we will understand in next slide and all the things. Analyze the risk. Now you got the risk, correct? This loss happened. Now you have to analyze why, what, when, who are involved, how much, you know.
going to be negative? What would be the impact on balance sheet? Correct. And how our store team member will respond, what our bosses will ask, a lot of things. Then evaluate and rank the risk. So whether risk is ignorable and how tough a risk going to be, or can I rank the risk, like priority kind of things. Suppose you have a five different risk. So which risk got the first priority to control or solve? Correct. Then treat the risk. Treating also very much needed, because suppose if you got a one risk like document is missing, and because of the document missing, customer was shouting, or customer gave us some kind of product for the repair or service and that product is missing, so that is a risk related to customer. So you should not ignore. Correct. You have to treat the risk also. You need to add, you need to make new process. It should not happen. Correct. Then monitor and review the risk. So once you got the risk, you have analyzed, evaluated, then you have treated also, and you start monitoring. Suppose just now I said customer came with the product for warranty and it's got, and you have received, you have given a documentation to customer, but when customer came to store, that product was missing. Correct. So this should not get repeated. Remember this. So you need to monitor this kind of a cases whenever comes to your store, because again it create a bad mouth about the brand, about the team, about the store, and lot many things. Correct. So चलिए हिंदी में समझ लेते हैं। तो रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जाए? हाउ टू कंट्रोल द रिस्क? सो सबसे पहले रिस्क को पता करना है क्या है। करेक्ट। रिस्क को पता करने के बाद एनालाइज द रिस्क, उसको थोड़ा विश्लेषण में डालिए, ब्रेकआउट कीजिए कहाँ कहाँ ये रिस्क इन्वॉल्व था, कौन कौन इन्वॉल्व है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब फाइंड आउट करना है। फिर इवेलुएट एंड रैंक द रिस्क, उसका मूल्यांकन कीजिए कि कितने का रिस्क है और कौन सा रिस्क सबसे पहले लेवल पे आएगा, जिसको हमको पहले कंट्रोल करना है। करेक्ट। फिर ट्रीट द रिस्क, रिस्क को अच्छे से ट्रीट करना है, उसको भी रिस्पेक्ट देना है। करेक्ट। क्योंकि वो भी एक प्रकार का गेस्ट है आपके बिजनेस के लिए, ये बात याद रखिएगा। रिस्क ऐसे ही नहीं आया ना, आपने कुछ किया है तभी तो आया है, तो वो भी गेस्ट है, बट आप अपने माइंड में ये मत रखिएगा कि ये निगेटिव है। हो सकता है कि वो एक अच्छा लर्निंग चैप्टर हो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। करेक्ट। सो ट्रीट करना है अच्छे से, इग्नोरेंस में नहीं डालना है, सबको कम्युनिकेट करना है, इन डिटेल डेप्थ उसके बारे में जानना है और डिस्कस करना है टीम के साथ। मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क, मतलब आप रिस्क तो हो गया, आपको लगा कि एक कस्टमर प्रोडक्ट देकर गया था सर्विस के लिए, वो प्रोडक्ट मिसिंग है और कस्टमर आ गया, उसको देना कैसे है, ये आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट मिसिंग है जो कि वारंटी के अंदर था, सर्विस के लिए आया था। तो आपको ना मॉनिटरिंग में डाल देना है इस प्रोसेस को, कि दोबारा ये रिस्क ना हो, एटलीस्ट पर्टिकुलर ये सेगमेंट दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है। तो आपको बार बार रिव्यू करते रहना है। करेक्ट। और बार बार डिस्कशन करते रहना है, और आपके पास ऐसा एसओपी प्रोसेस होना चाहिए कि रिस्क कभी भी डेवलप ना हो। याद रखिएगा, रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप प्रोडक्ट मिसिंग है सर, तो हम आपको एक नया प्रोडक्ट दे सकते हैं। देखिए, आपकी पॉलिसी हो सकती है स्टोर की कि आप नया प्रोडक्ट दे दें, लेकिन क्या गारंटी कि वो दोबारा रिस्क नहीं आएगा, उस तरह का दोबारा रिस्क नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे रिस्क आ सकता है। अभी मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट का नया रिक्वेस्ट दिया अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, और वो प्रोडक्ट आपके स्टोर में आना चाहिए। ठीक है। सारा कुछ हो गया, प्रोडक्ट 2 घंटे के अंदर आपके स्टोर में आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे रिस्क क्या क्या हो सकता है? सारा कुछ अप्रूव्ड है, रिस्क नंबर 1।
ट्रांसपोर्टेशन डिले हो सकता है, करेक्ट। हाँ, व्हीकल काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे रोड एक्सीडेंट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट पहुंचे ही ना, करेक्ट। और मान लीजिए आपके स्टोर में प्रोडक्ट पहुंचा भी तो वो डैमेज था, क्योंकि बारिश हो रहा था, करेक्ट, हमने उसको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं किया, करेक्ट। तो ये सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो कभी भी आ सकते हैं, तो आपको ना प्री प्लान करके रखना है। देखिए हमारे जो लास्ट वीडियो पे जो हमने डिस्कशन किया था कि हाउ टू बिकम अ गुड स्टोर मैनेजर, करेक्ट। तो उसमें भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि कोई भी चीज सडनली नहीं होता है, सब कुछ प्री प्लान होता है, बट हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, करेक्ट। तो इसके बारे में जानना जरूरी पड़ता है आपको, ठीक है। So remember this: the risk will not come automatic. We are only telling to risk come, and risk will come when we are ignoring our processes, not strict. Our SOPs are not helping to us. Either our policies are very old, or we are not able to communicate, or we are not creating a milestone for our store business. Correct. Or there is something missing. So take an example. Again, I'll give you an example. Suppose you have ordered new product to your head of department and everything has got approved, and now the product should come to store within 2 hours. So correct. So what are the risk involved? Transportation issue. Correct. When product is coming through vehicle, the vehicle can get failure. Driver mm, can say I am not well. Correct. So delay will happen, isn't it? This is also risk kind of things. And suppose road accident happen, you cannot stop, correct. Nothing is in your hand, but these are the risk which can be part of your controlling process. You can create one process where you can create one system where risk can be minimized. Yes, 100% sure, correct. Suppose one more example you take. Right now I'm making this video, correct, I'm recording. Now suddenly I got to know, oh my God, my laptop battery got over. Correct. So it's not happen simply, na. Correct. I have to check before starting the recording that whether my battery is mm, proper or not, electricity connection is good or not. Correct. These are the things. So you cannot say the risk came automatic. So this is all about the risk, and we will start chapter 1 from today. So let's see what are the things are there under chapter 1. So risk related to retail store management. So point number 1, types of operational risk: financial risk, security risk, compliance risks, customer related risks, environmental risks. So these are the 6 points are there, and we will try to understand in deeper uh, in upcoming videos. Not today, because otherwise the video will become longer. Okay. And one more thing, each point will have a sub points. So much more in detail. So you'll have lot of talking on related to store risk, retail business risk. Correct. It's not a retail business risk. It's a retail business risk. If I'll talk, that's a very big. It's only related to store where you are selling the product or service, nothing else. Okay. तो क्या क्या बात करेंगे रिस्क रिलेटेड टू रिटेल स्टोर मैनेजमेंट। तो सबसे पहला है कितने कौन से ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं। ऑपरेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटी से संबंधित। फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय लॉसेस क्या क्या हो सकता है पैसे से संबंधित। सिक्योरिटी रिस्क, सुरक्षा से संबंधित चीजें, करेक्ट। कंप्लायंसेस रिस्क मतलब लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसका अपना कंप्लायंसेस होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या होता है, करेक्ट, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर रिलेटेड रिस्क, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है,
और यही मेरा एग्जाम्पल भी था अभी कुछ मिनट पहले, करेक्ट। फिर इन्वायरमेंटल रिस्क। तो वातावरण से संबंधित क्या क्या रिस्क हो सकता है? अच्छा, इन्वायरमेंटल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वेदर होता है या कुछ, बहुत सारा होता है, सोशल होता है, फेस्टिवल होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इन सब बातों के बारे में हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। और if you like this video, please subscribe the channel and yes, share this knowledge to someone else. अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें दूसरों को। ये नॉलेज है, याद रखिएगा, मेरे वीडियो में बहुत सारा फैशनेबल चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज ऑल डिपेंड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड विच आई हैव लर्न। तो मैं शेयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।